Start today's session. So first, we are going to revise what we did yesterday about the database functions. So now you will be able to see my screen. I hope the screen is visible to everyone. It is visible. Screen is visible. Yes. Okay, fine. Now see, let us discuss the task first. I'm coming to this only, and then I will explain all the things together. So अभी many people now they started doing this without creating a criteria table. Now first thing is that I told you when you are using the dcount, dsum or dget function, what is the requirement is that you have to create a database table. You have to create a criteria table. अगर वो आपने टेबल नहीं बनाया होगा ना तो फिर आपका नहीं हो पाएगा. You will not be able to work on it. So what we will do is we will create a criteria table. Okay. Now, I'll create the criteria. So how to create this table? Just copy the headings over here. I'll copy the headings over here. And I want the sales in the last column and salesman before that. Okay, so now I have, this is our criteria table. We will name it as criteria. So I'm just putting it in line with the main table. And I'm calling this as a criteria table. So this is our criteria table. And this we will call it as database table. Okay. This is the database table, this is the criteria table. Now in the criteria table, we have to specify the criteria which we want to find out, and we'll put the formula in the sales column only, and it can work vice versa also. Suppose from parts I want to find out from parts I want to find out like the salesman who is selling those parts or the units. We can put the formula in the parts also. Okay, wherever you want to get the results, we can put it there. But I want the results as sales, so we'll put the formulas in sales only. Chaliye, so now let us start with the functions. First question. How many times sales have been made in the month of April? Okay, how many times sales have been made in the month of April? तो हमें अप्रैल में कितनी बार सेल्स हुआ है वो निकालना है. तो वी विल यूज डी काउंट. अभी यहाँ पे लगाएंगे. इस टेबल का नाम दे देंगे हम. तो हाउ डू वी गिव अ नेम? बाय गोइंग टू फॉर्मूला टैब, नेम मैनेजर. विल गिव अ नेम टू दिस. लेट्स से क्राइटेरिया. Okay. And this table is also, this table we already named as data tab. This entire table is called data tab. So first I will write down D count. Okay. And I want to find out April. So should I use D count or D count A? What will work? Tell me. D count से काम हो जाएगा ये D count A लगाना पड़ेगा. D count A. D count A, correct. Because count function only counts the number. Here we have to count the month name. D count or D count A? What will work? Tell me. ये कहाँ से आ गया? एक मिनट. D count से काम. Correct. So we will use what? D count A. Correct. So just look here in the formula bar. यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ D count A,
and open the bracket. First, it is asking for database. It is asking for database. So in the database, what should we give? We should give the name of the table. So table का नाम क्या है? Data tab. Data tab is the name of the table. Now see why it is not selecting, because again the same problem is there. I had given the name ranges to the previous sheet और ये sheet मैंने copy paste करी है. So better to use, better to give a new name. ठीक है, तो इसको हम यहाँ से select करते हैं इस table को पहला, and let me give a new name. Let me select the entire table and give it a new name. So I'll just call it as DAT, that. ठीक है, data table DAT. Now I will write the formula here in the sales. Problem was also faced by me. Yes, so I'm solving this for everyone now. So you can specify, you can unmute and answer because I don't read chats when I'm explaining. तो आप unmute करके बोलिए, ज़्यादा easy रहेगा, easy अच्छा होगा वो. ठीक है, चलिए. So is equal to D count. Database में we will select that. ये table आ गई. Field. Now field में what should we select? Tell me. What do we select in the field? Sales. Sales column, the heading. Sales in units, we will select sales in unit. Okay. Comma. What should I give in the criteria? What should I give in the criteria? And it should be count A, basically. So should I select month or sales? Basically, month or sales? Sales only now, because you want to find out sales. Now, what should I give in the criteria? What should I give in the criteria? This entire table. This entire table, criteria, and close the bracket. We are getting 281 as the answer. But we wanted the sales happening in the month of April only. Okay, तो अप्रैल में जो सेल्स हुआ था वो चाहिए. यहाँ पे 281 आ रहा है आंसर. 284 कल आ रहा था because I had put sales amount in 3 blank columns, blank rows. यहाँ पे 281 आ रहा है अभी. ठीक है, if you work on the same sheet which I have shared now, आज तो आपको भी 281 ही मिलेगा. But we want to find out the sales happening in the month of April. So I am writing April over here. Are you all getting the answer 23? Are you all getting the answer 23? Now suppose if I include, if I want to find out the sales which are more than 500 rupees in the month of April, how can I find that? Sales which are more than 500 rupees, greater than 500 rupees. How can I find that? तो क्राइटेरिया टेबल में फिर एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा सेल्स यूनिट का, और उसके बाद हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. उसके अंदर लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन 500. विल इट वर्क देन? Am I audible, everyone? What I'm saying? Yes, sir. Yes, suppose I want to find out that in April, how many times sales has been made, which is more than 5,000 units. 5,000 यूनिट से ज्यादा कितनी बार बेचा है अप्रैल में, ये निकालना है. तो मैंने क्या किया? I have added one more column in the criteria, that is sales units, and here I have put this is the result. We will call it as a result column रख लेते हैं इसका नाम. This is the result. Okay. So now whatever criteria we have to put in the criteria table only, and the result will get in the last column. So I'm putting greater than 5,000. So in April, we could sell 5,000 units for 10 times. अगर मैं यहाँ पे make करता हूँ, so
the result is same for May also. Agar if I do it January, it is 5. Okay, so you can put anything. Now if I put hard disk, it is 2. So that means in January hard disk was sold 2 times where the quantity was more than 5,000 units. अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो 6 आ रहा है, तो जनवरी में 6 बार हार्ड डिस्क बिका है। ठीक है। Now today we are going to learn date functions. So we will see, suppose you want to find out कि जनवरी से लेके मार्च मतलब क्वार्टर नंबर 4 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कितना सेल हुआ है। Now what condition I can put in the month? Can I write January to March and will it give me the answer? इसका कोई तरीका बताएगा? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द सेल्स बिटवीन जनवरी एंड मार्च ऑफ हार्ड डिस्क. हाउ टू गेट दिस रिजल्ट यूजिंग डी काउंट. How many times sales has happened in the month of January to March? Yes, anyone? Sir, exactly don't know, but I think greater than December and less than April. Okay, so we can say greater than January. It is 38. तो जनवरी के बाद में अगर मैं हार्ड डिस्क भी लिख देता हूँ, अभी सिर्फ हम जनवरी देते हैं और हार्ड डिस्क देते हैं, रिजल्ट आ रहा है 0. There is a spelling mistake in hard disk. Let me correct it. So in January hard disk is 6. ठीक है, और मार्च में देखते हैं, मार्च में भी हार्ड डिस्क 6 ही है. ठीक है, एलईडी लेते हैं एक बार. एलईडी मार्च में 5 है और जनवरी में 5 है, फरवरी में 0 है. सो आई वांट टू फाइंड आउट बिटवीन जनवरी टू मार्च. ठीक है, तो उसका आंसर 10 आना चाहिए. सो हाउ कैन आई गिव दैट? अगर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन जनवरी, आई एम गेटिंग 31, but is it the right answer? Sir, and condition and greater than equal to January and less than equal to March. We'll put a and condition. And acha, whenever you are using an operator, the operator we need to put in inverted commas. Is it? या बिना उसके भी काम करता है? नहीं करेगा. उससे भी काम कर रहा है शायद. देखिए नहीं कर रहा है. तो what we need to do is whenever you are using any operator with the text, you have to put this, then put a inverted comma. और ये जनवरी मंथ लिखा है ना, ये भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा. इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे, एक एंड लगाएंगे, एंड मार्च को विल पुट इन इन्वर्टेड कॉमास. सर एंड के बिना भी कर सकते हैं ना, पूरा टेक्स्ट डाल के इन्वर्टेड कॉमा में. कैसा? एक अगर मिनट. मैं एंड नहीं करूंगा तो भी वो चलेगा ना, डबल कोट भी बीच में से निकाल दो. सिर्फ उस पे रखते हैं. आपको नहीं सर, जनवरी के बाद में कोट रखो और ग्रेटर देन के पहले बीच वाला कोट. यही बोल रहे हैं क्या? हाँ शायद. नो. ओके. ऐसा नहीं. तो हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? आई वांट टू फाइंड आउट कि जनवरी से लेके मार्च के बीच में कितना सेल हुआ है. ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड आउट द सेल्स बिटवीन 2 मंथ्स. तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ डूइंग इट. मतलब अगर आपको बिना किसी फॉर्मूले के करना है तो मैन्युअली जो करते हैं लोग, जनरली जो करेंगे वो क्या होगा कि यू विल सॉर्ट दिस डेटा. तो हम जाते हैं कस्टम सॉर्ट में, सॉर्ट पे चले जाते हैं, कस्टम सॉर्ट, एंड आई वांट टू सॉर्ट दिस बेस्ड ऑन द मंथ्स. तो मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ. ठीक है, तो ये आ गया अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जुलाई. ठीक है, मार्च.
अब ये जो सॉर्टिंग है ना, अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग हो रही है. आई वांट टू सॉर्ट द मंथ्स बाय लाइक आफ्टर जन फेब मार्च शुड कम. सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, हाउ कैन वी डू इट? ये भी कल हमने डिस्कस किया था. एनीवन हु कैन गिव मी एन आंसर फॉर दिस, हाउ वी कैन सॉर्ट द मंथ बेस्ड ऑन द अल्फाबेट्स? और ये जो लिखा हुआ है इसको नहीं चेंज करना है. यहाँ पे हम कस्टम लिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि जो अप्रैल के सामने डेट और ये है इसको चेंज नहीं कर सकते. बट आई वांट टू स्टिल सॉर्ट द मंथ्स फ्रॉम 1 to 12. व्हाट इज द ऑप्शन? सर दूसरे कॉलम में जनवरी फरवरी मार्च लेके उसको अप टू दिसंबर ड्रैग करके फिर वहां से वो वैलिडेशन जो कर रहे थे कल, डेटा वैलिडेशन, हाँ, उसके बाद में वहां से उसको वो वाले कॉलम में लिस्ट के अंदर में वो वाला कॉलम हम ले लेंगे सर, इस तरीके से. copy the data, get data table, copy the table, copy the table, get data. Okay, you want to say Power Query, Francis? No, we can do one more thing here. I'll show you one more method. Okay, I'll show you one more method. Easier method. Basically, we can So add by one month column. number. हाँ, correct. So we will put a month number here. Month number. ठीक है. और मंथ नंबर कैसे कि अभी मुझे बताना है, मुझे सिर्फ जैन फेब मार्च चाहिए. तो व्हाट आई वांट इज कि जहाँ पे भी जनवरी लिखा आ रहा है वहां पे 1 आ जाए, जहाँ पे भी फरवरी आ रहा है वहां पे 2 आ जाए, और जहाँ पे भी मार्च आ रहा है वहां पे 3 आ जाए. तो वो कैसे कर सकते हैं? एनीवन, हाउ वी कैन रिप्लेस जनवरी विथ 1, फरवरी विथ 2 एंड मार्च विथ 3 in the month number? Sir, by text. By text, or we can see. Now I'm starting with the if function. Correct, Sagar is right. If function we can use. There is an updated version of if that is called a switch. So there is a new function which is called a switch. Have you ever used this function switch? तो switch क्या करता है? switch भी आपके उसको चेंज कर देगा फंक्शन को. ठीक है, बट वी कैन यूज if also. So I will tell you if also. if करके in this entire column, wherever the word January is coming, January is coming, I want to replace it with 1. Okay, else we will write nested if. Now you are learning if also, so we are writing nested if. So in this if only I want to find out if it is January then give me 1, if it is February then give me 2, or else give me 3, and if it is March give me 3. So how should I write this? Because in if you can put only one condition and Sir, a true ifs value are or a better false. than this if. Ifs. 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 और Or we can use a nested if also. No, not or basically. How we can use or also, but what I can do is नहीं, और में तो ये होगा कि जैन फेब मार्च कुछ तीनों में से कुछ भी हो तो 1 आ जाए. वैसा नहीं चाहिए, जनवरी हो तो 1 आए. ठीक है, अगर जनवरी नहीं है तो वी वांट टू अगेन सर्च, सेलेक्ट, फाइंड आउट कि इफ द मंथ इज February. So I will again select this list, comma, put February. Okay. So if the list, if the range is having January, then give me 1. If not, then look for February. If it is February, then give me 2. Okay. And then again, look for March. So again, if C13 to C305 is equal to March, then give me 3. Okay. And what if it is not January or February or March or any other month? Then I want a blank. I don't want anything. So this is the nested if. Can you see? We need to close one more bracket. So always remember, when we are writing nested formulas, you have to close the same number of brackets that you are opening. तो हमने पहला if लिखा, उसमें पूछा C13 से C305 जो है वो क्या ये जनवरी है? If it is January, then give me 1. If
this is not January, then look for is it February. If it is February, then give me 2. Else look for March. If it is March, then give me 3, comma. If it is not, then give me blank. तो blank के लिए मैंने ये blank लगा दिया है, ठीक है. You entered if you are also this function. सर So मार्च के बाद जो कोमा 3 के बाद ब्रैकेट है वो ब्रैकेट नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। okay, correct. So here, see now I will copy paste this formula till the end. अभी आपको blank दिखा रहा है because it is April. उसके बाद जहां पे भी Jan Feb March आएगा ना, it will show you 1 2 3. देखिए दिख रहा है? अच्छा, the formula is already pasted because this is a table. ठीक है, I need not drag it. ये formula already लग चुका था. So when I filter this and if I look for January month, it will show me 1. If I select February, it will show me 2. If I select March, it will show me 3. Clear? Now what we can do is now we can sort based on the month number. So I'll go to sort and we can select this. Okay, now again there is a issue. This is the part of an array. कल मैंने आपको array का concept बताया था, sequence formula जब बताया था. So if it is a part of array, you cannot sort array. So it is giving A to Z, but these are numbers. So what should I do now to represent them as a number? What should I do now? I'm copying this formula for everyone's benefit. You can simply copy paste this formula in your sheet. You will get the answers. Yes, tell me, what should I do to get 1 2 3 and to get rid of this array? ये फॉर्मूला हमने एक ही बार लगाया था, लेकिन इसका रिजल्ट सब में आ रहा है. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाए लेकिन फॉर्मूला ना आए. व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? टेल मी फर्स्ट, जल्दी बताइए. सर पेज स्पेशल वेरी गुड. किसने बोला ये? सर हिरेन हिरेन. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? दिस इज पेज स्पेशल व्हाट वी हैव लर्नड यस्टरडे. ये देखिए, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी. एंड पहले पेस्ट स्पेशल का कोई शॉर्टकट की नहीं था. सो वी हैड टू राइट क्लिक एंड गो टू पेस्ट एंड देन पेस्ट एज वैल्यूज. अभी इसका एक शॉर्टकट की आ गया है विच इज ऑल्ट कंट्रोल एंड वी. ऑल्ट कंट्रोल वी. ठीक है, तो मैं ये प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट कंट्रोल वी. नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड. देयर इज नो एरे नाउ. ठीक है, अब ये एरे जा चुका है. अब जहां पे भी जनवरी होगा, आपको ये देखो फरवरी में 2 लिख के दिख रहा है, जनवरी में 1 दिख रहा है, एंड March में you will get 3. Now what we can do is we can sort it using the number filters. ये देखिए, अब आ गया जैन पहले आ गया, फेब बाद में आ गया, मार्च पहले आ गया, मार्च आ गया. ठीक है. Now what was the use? Why did we sort it? सॉर्ट करने का क्या मकसद था? मुझे ही पता लगाना कि जनवरी से मार्च तक की सेल कितनी है. So in the criteria, I want to put month number 1 2 3. Can we use and function over here और फंक्शन ओवर हियर? तो यहाँ पे मैंने लिखा क्राइटेरिया में और 1 2 3 कर दिया. तो इसने तो ट्रू दे दिया इसका रिजल्ट. और व्हाट? और में वी हैव टू सेलेक्ट द रेंज. एक्चुअली वी हैव टू सेलेक्ट दिस एज अ रेंज. दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3. इसको इस ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट में. D12 नहीं है, D13 D3.
And in the month, I have to select month number instead of month. Yes. Now see, 1 में आ रहा है 5, 2 में आ रहा है 5, 3 में आ रहा है 5. ठीक है. If I put if I put blank, it will give me 37. ठीक है. Blank actually मतलब we are not putting any criteria. LED भी हटा देते हैं तो ये आ रहा है. ठीक है. If I put some blank space, we have got 0 over here. If I put one number, it is giving me 24. मतलब जनवरी में जो सेल्स हुआ है यूनिट्स का वो 24 टाइम्स हुआ है. फरवरी में 24 टाइम्स हुआ है. मार्च में भी 24 इट इज शोइंग मी. ठीक है. आई वांट टू गेट द एडिशन ऑफ 1 2 3. हाउ टू डू इट, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ. How to get the total sales done in the month of from March to January to March. So basically what we need to do is we need to put a greater than sign. अगर मैं greater than 1 लिखता हूँ यहाँ पे month number में तो 48 आ रहा है. Now what does it mean? I put greater than 1, and if I put greater than 2, it is 24, and greater than 3, it is 0. So greater than 1 means February and March, sir. Correct. So greater than 1 means Jan, Feb, March, all three are getting included. वही चाहिए था हमारे को. No, so greater than 1 means only February and March. हाँ? Greater than 0. Greater than 1 is only February and March. Greater than 0 will January, February, March. Okay. Yes. So greater than 1 is only February and March. So if we put greater than 0, then it will be Jan, Feb, March. But since we have not given any number, it is going to give only 3 months. लेकिन अगर मान लो अप्रैल मई में भी होता तो फिर हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आता, because it would have calculated the total of the other months also, 4, 5, 6 also. So how do we add like greater than 0 and less than 4? ऐसा करके हम कुछ कर सकते हैं. या less than 2 करता हूं मैं यहाँ पर, तो Jan Feb का दिखाना चाहिए फिर. अब नहीं, we are not getting like this. So because in maths we can use, but in Excel these are not allowed. Less than 4. Okay, yeah. So Francis was saying less than 4, but suppose I put less than 2 now, I'm getting 24. So less than 2 का मतलब क्या हुआ कि it is taking only January month का sale. If I put less than 3, it will take Jan, Feb both. If I put less than 4, it will take Jan, Feb, March both. So that is how you can play around. Now let us put April में 4. ठीक है. तो जहाँ April है ना, I'm putting 4 in April and dragging it down. For April, and for August I'll put 8. This I've done manually. Okay, and we can use the formula also. Okay, now see, we wrote the if function for getting the month's number. I will show you how to use the switch. Now suppose I write 8. So this number has changed because it is taking all the month from January to July. If I take is equals to, if I write only 8, it will give me August ka sales. If I put, can I put less than is equal to 8? So as to include the 8th month also. Yes. So now it is giving me 117. So from January till August, the sales are 118. Are you getting it? But since you have not allotted numbers after April, that is for May, June, and July, then you straight away went to August, I think. Sorry, I cannot hear. Can you come again, please? We moved on to August, are you? थोड़ा सा स्लो आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आवाज में. Have you all understood others? If you put so for January to March, we can write criteria as greater than 1. Yes, but greater than is equal to 1 will include till August also. If I given the other, see, if I put greater than is equal to 1, see, the result is 117. Now Jan, Feb, March is not 117 only.
So I want to find only 3 months. Since I have given the numbers for August also, July also, it will not give the correct result. So I want 1 2 3 ऐसा चाहिए मुझे 1 2 3 1 से लेके 3rd month तक का वो कैसा आएगा that is what I am trying to solve. Now I was saying कि we can do something like this is greater than and 1 and less than and let's say 4. Sorry, is equals to. Am I audible now? Yes, sir. Now you are audible. Alok ji, I was saying at that time that you have allotted numbers from 1 to 3 Correct. for January, February, March, and then straight away 8 to August, but in between, not for Mhm. April, May, and June, I think so, and July. Yeah. No, actually, I after April, August had come, so I had given 8 for August. We need to Yeah, give the understood. month's number But for every. the answer will not include April, May, June, July, August. April, so you had given 4. Correct. May, June, and July will be missing in the answers. Correct. So for that, I will show you one formula. Now, see, suppose you want to convert the month name into month number. So for that, we had used if function. Now, if function will become very lengthy because 12 times you'll have to write if 11 times for 12 months. Yeah, there is a straight away formula, I think. There is one. Yeah, there is one formula, and which is the month formula. Yeah, So similarly for a week is also there, like Monday, Tuesday also. correct. So it will give you the month number if you put, but we need to have a date for that. If you have only month, it will not give you. Now, what you can do is, I'm just sharing it for everyone's benefit. Suppose we have month number, so I'm putting January over here, February over here. I'll just zoom once I am complete. आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ कि या आप जूम करते हो तब हाँ Now you can see properly now. January to March आपको लिस्ट दिख रहा होगा. एक बार आपने पहले शायद मैंने आपका YouTube में या कहीं देखा था, क्लास किया था, तो वो VLOOKUP या जिसमें हम वो मल्टीपल टेबल करके करते हैं, यहाँ पे वो नहीं कर सकते मल्टीपल कंडीशन. हाँ, मींस कर मैं सकते डेट हैं. कॉलम को 2 बार रखता हूँ और बाद में लेस देन ग्रेटर देन दे देता हूँ, मींस मंथ कॉलम को, नंबर ऑफ मंथ को. राइट तो वो हमारा एंड और के कंडीशन पे काम करेगा. करेक्ट, कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको बता रहा था, वो भी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ. बट जैसे सपोज आई हैव दिस इज माय मंथ नेम. ओके, दिस माय मंथ नेम एंड दिस इज माय मंथ नंबर. नाउ व्हाट आई वांट इस पूरी लिस्ट से जहां पर भी मेरे पास मंथ दिस इज रिपीटेशन, सो लेट मी ओके, जहां पे भी मेरे पास मंथ नेम है उसकी जगह पे मंथ नंबर आ जाए. सो सपोज आई एम टाइपिंग सम नेम्स लाइक जुलाई, लेट्स से अगस्त and let's say December. Now it's a question for everyone. Now suppose from this list, I want to find out. Okay, let me just convert into uppercase. Suppose now if you want to convert the month into month name into month number, how would you do it? ये तो बहुत बेसिक चीज है बिल्कुल एक्सेल में. ये कैसे करेंगे? ये लिस्ट है हमारे पास. लुकअप. Lookup, correct. So we can use lookup function, not VLOOKUP, but lookup only. And lookup value is this lookup vector. Now lookup vector will be which column you want to find out. And then there is a result vector. This is the result vector. Okay, so those who do not know lookup, they can see this. Now,
Why we are getting the wrong answer for lookup? Just a minute. Lookup value. Lookup, maybe we have to select this entire table. And then result vector. We can use a match also. For that matter, we can use match function to get the position of the number. Yes. So better to use match lookup की जगह पे. वैसे lookup should also work. Somehow it is not working. So this is one function which you can use to convert the month name into number. Do you want me to repeat this match function for everyone? Do you want me to repeat? हाँ, VLOOKUP तो use कर ही सकते हैं. Not a problem in that VLOOKUP. But match is also a alternative. So in match, what it does, see, it works similar to VLOOKUP. So in VLOOKUP also you put Match the will not work when there is a not sorting of data. It's a sorted data. huh? It's a sorted data, January to December. It is a sorted data. That is why we could use this match function. Otherwise, क्योंकि वो इसकी position बता रहा है, July 7th पे ही आ रहा है. अगर ये sorted नहीं होता, ये April से लेके December होता, तो we could not have used that. फिर हमें वो use करना पड़ता. There is one more function which is called as a switch. easiest नहीं, month वाला function नहीं रहेगा, easiest. Month वाला जो function, month वाला है function, वो easiest नहीं रहेगा. Text month में convert करना है वो. month वाले function में ना you have to put the date. हमारे पास date का है, हमारे पास सिर्फ month का नाम है. No, sir. Text function which convert your month to month number. Okay, text function, right? So we can say, but it will again we need a date for this. No. Just put double M in inverted comma. After this, double M. Double M inverted comma double M. Just put one M. Okay. It works only with date. So now suppose if I put today's date, okay, now what you are saying, if I use text function and from this date, if I say double M, Okay. now it will give me 11. Now, since we are having month, we cannot use the date function. Okay. We cannot use the It's text already function. in text. Okay. Now from here, if I write the month function and I select the date, then it will give me 11 number. Okay. But in our data, we did not have month, we did not have date, we have only month. Okay. So we can use the lookup functions to convert the months into number. And once we have converted into number, then we can apply different combinations to get the result from 1 to 3 and greater than, less than, and all these things. Okay. Now, since we have to do the date functions as well. Okay. This was yesterday's revision. आज का जो 1 घंटा है वो इसी में चला गया ऐसे mostly. Okay, but I hope you have understood what we have done so far. जितने लोग भी हैं, can you confirm now? Are you comfortable with D count and D sum again? Because I had shown you. Adisha, you are getting some problem. Is it solved now, Adisha? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Now is it clear to everyone how to use the decount? Okay, now suppose I want to still the problem is there that 1, 2, 3 I want to find out for 1, 2, 3 month I want to find out. So generally what happens is when you give suppose I want to use SUMIF or let us use COUNTIF instead of decount and give a regular expression that we want to count all the sales which are done in the month of January to March, between January and March, because our task is based on this only. So I have to obviously teach you that count if, okay, and if only because I'm taking one criteria only, not multiple criteria. So count if and range. In the range, I will select month number, okay, and in the month number D13 to D303, I'm typing. Okay, now from here, the criteria should be that this range should either have 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. It should have 1 or 2 or 3. Then I should get the result, the count of the numbers. Okay. So criteria, in the criteria, what can I give? Can I give or? And in the or, I can put 1, 2, 3. So or is the operator basically when we want to choose either any of the 3, then we can use or. Okay. And see what do we get as a result. We get a 0. Okay, but we did not specify okay where it should be or. So this range is equals to D13 D. Now we have converted this formula into an array formula. It is showing 0 everywhere. Okay. Just give me 1 minute. Or sorry, here we have to write the month number. That is, I'm writing 1 over here and so this is the range. From this range, we want to find out okay, in that range wherever 1 is appearing. Okay, in the one wherever 1 is appearing. So it is 24 times that 1 is coming. Okay, 1 now I have counted only 1. I want 1 and 2 also. 1 and 2 also. Now AND function says that both the conditions should be satisfied, which is not possible because either this range will have 1 or 2 or 3, not all together. Okay, so if it is 2, 25 25 तो आंसर 74 आना चाहिए तीनों का टोटल का. तो अब इसमें how we can get the total of 1, 2, 3? January should be 25. Yeah, January is 25 only. Well, January is coming 25 times. तो 1 का तो 25 आई अच्छा let me put 1 over here. Yeah, it is coming as 24. It should be 25. That is what you are saying. हाँ सर वो एक फर्स्ट वाला जो है वहां पे नहीं है, हाँ जी वही। हाँ यहाँ गायब हो गया था. ठीक है ठीक है. तो 25 आ रहा है और इसको एक काम करते हैं, इसका हम रेफरेंस यहाँ पे दे देते हैं इस सेल का. सो व्हेन आई चेंज एनीथिंग हियर इट शुड चेंज. तो यहाँ पे 125 आ रहा है. सेकेंड मंथ मैंने किया तो भी 25 आ रहा है और थर्ड मंथ मैंने किया तो भी 25 आ रहा है. तो आई वांट 75 एज अ रिजल्ट. सो काउंट इफ तो नहीं काम कर रहा है यहाँ पर. काउंट इफ्स करेंगे तो विल इट वर्क? काउंट इफ्स क्या करेगा कि वी कैन गिव मल्टीपल कंडीशन. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
if I convert this into countifs, and I had one more idea. Okay, let me show you this, then we'll try that one also. So again, I will give this range D3 to D303. This is the second criteria, and I'm saying 2 over here, and then again the same list D303, and I'm saying 3 over here. Now this 2 and 3 we need to put into bracket inverted commas. No. So because countifs also looks for multiple conditions. So in this cell, if all the 3 numbers are present, 1, 2, 3, then only it will count. What I was saying is, okay, suppose I want to find out 1, 2, 3 together. What we can do is, we can extend a criteria in the D count and something like this I can do. So I'm writing 1, 2, 3 over here. Okay. This is an experiment. I've not done it before. This is extempore that I'm doing. Okay, so maybe we'll not get the result, but I'm just trying. Okay. D count and database. Database is my data table, data dat, comma, field. Field now I want month number, comma. Now my criteria would be this. Criteria would be this. Okay. Now let us see if we get the result or not. Got the result. Have you understood what I did? क्या आपको समझा? Everyone. See, you have to apply. Sometimes you have to go beyond what you've learned and apply, like try and test things, then you get the result. Criteria based table. Huh? Or condition in criteria based table. Or condition or criteria. नहीं, आपने जो अप्लाई किया वो और कंडीशन इन क्राइटेरिया बेस्ड टेबल है. अगर मैं साइड में करता हूँ तो वो एंड होता है, और रो वाइज करता हूँ तो वो और कंडीशन होता है. हाँ हाँ. तो उससे हो रहा है क्या आपने जो किया उससे? नहीं, आपने जो किया वो वही है ना सर. नहीं, मैंने भाई डी काउंट यूज किया है. आई हैव यूज डी काउंट. काउंटिफ नहीं कर रहा हूँ मैं. आई हैव यूज डी काउंट. और डी काउंट में हम जो क्राइटेरिया देते हैं, वी वर गिविंग ओनली वन क्राइटेरिया. मैंने उसी कॉलम में 1, 2, 3 तीनों लिख दिया. हाँ सर, वही मैंने पहले अभी ट्राई किया था और आपको बोला था कि आपने इससे पहले एक वो शायद वीलुकअप वाला था, या वीलुकअप में ट्रू कंडीशन वाला, या उसी में ये 2-3 कंडीशन जो थी वो करनी थी. तो हमने इसी बेसिस पे किया था एक ही कि सेल रो में लिख वाइज दिया हम था. करते हैं तो वो और कंडीशन होता है, और एक ही रो में होता है तो वो एंड कंडीशन वो होता है. हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वो था एडवांस फिल्टर. हाँ, वो तो एडवांस वो फिल्टर है, वही करेक्ट. वही ये सेम कंडीशन पे यूज होगा. हाँ 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 हाँ, राइट राइट तो राइट. शायद ये सर 1 2 3 भी अभी जरूरत नहीं होगी. जनवरी फरवरी मार्च लिखेंगे तो भी हो जाएगा शायद. Correct, correct, correct. So if I put January, if I use the month name only, and if I write January over here, and then if I write February, and if I write March, February की spelling में कुछ गड़बड़ हुआ है. FABRUARY. Now also I'm getting the result 75. So have you understood? So when you want to find out cumulative numbers, you have to put multiple criteria. Criteria table में अभी हम रो वाइज चल रहे थे, अभी हम कॉलम में अगर और चीजें ऐड करेंगे तो you will get the answers. Now suppose I want to find out between two dates के बीच में अगर मुझे पता लगाना है, या 2 दिनों पे पता लगाना है, तो what I can do is I can delete these and I can put these two dates. Suppose 6 and I put 12. So I need to change the criteria in my this thing, and it will give me the result for these dates. So यहाँ पर I will change the criteria column and make it M12 to M15. Now I'm getting 123.
also Now take what is whole criteria 123? table, so we can permutation combination anything. यस तो अगर मैंने ये तीनों डेट डाल दिया 6, 12 और 22, ठीक है, सो आई एम गेटिंग 11 एज अ रिजल्ट. सो यू कैन फिल्टर एंड सी हाउ दिस इज वर्किंग. मतलब इन तीनों डेट्स के कॉम्बिनेशन में आपको 11 मिल रहा है क्या, मतलब 6 को, 12 को और 22 को जो सेल हुआ है वो कितना हुआ है. ठीक है, if I take 6 and 22, number is something different. If I take 6 only, the number is different. So this is how you can play around with the data and do things. ठीक है. Sir, I have done this, but there is a one special attention that if you want only 6 and 12, then you need to remove that row from criteria table. Otherwise, it will give all result. Which row? If suppose आपने 3 डेट लिखे थे 6, 12, 22, फिर बाद में आप 6 और 12 रखेंगे या 6 और 22 रखेंगे, बीच का रो ब्लैंक रखेंगे, तो वो सारे रिजल्ट देगा. तो सारे रिजल्ट देख, हाँ, बिकॉज इट इज नॉट रीडिंग दैट. हाँ, तो यहाँ पे 20, अगर मैं यहाँ 22 लिखता हूँ वहाँ पे फिल्टर नहीं है. तो करेक्ट. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो मुझे अगर 2 कंडीशन देनी है तो 2 रो ही रखनी है. 2 रो में रखनी है, तीसरे में नहीं, ब्लैंक बीच में नहीं रखना है. करेक्ट. कहीं भी लास्ट में या कोई भी किसी मेरे क्राइटेरिया में कोई भी रो ब्लैंक नहीं होना चाहिए. करेक्ट. Yes, the recording will be available. I will be sharing the recording in the group once the session is over. So anyone who wants to leave for some work, they can. Now, see, let us come to the other things. The date functions basically. Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, as my Excel is not working, so can I get some 1 day time for submitting the task? Because हाँ, of you will the get, not a problem, not a problem. कल तक सबमिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, not a problem. okay, sir. Yeah. Okay, now so I'm closing this worksheet and I'm coming to day 5. Okay. And we will have some functions, date functions discussed today, because it's already 10, but we can extend this for next 15-20 minutes if everyone is okay with this. Can we extend it? Yes, sir, surely. Surely. आप तो तैयार रहते हैं आज बिल्कुल. सर आपने वैसे उसमें डेट वो टाइम भी 10 PM ही लिखा था, तो 10 PM से स्टार्ट कर रहे डेट को. हाँ. मुझे लग ही रहा था कि व्हेन आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस तो कुछ और ही निकले आएगा, तो डेट फंक्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा. बट नॉट अ प्रॉब्लम. 10 आई तो स्लीप बाय 11, तो मेरे लिए कोई वो नहीं है. आई कैन गिव 1 more hour also, but there are people who might have different schedule. एक second, let me just select the sheet. देखिए डे 5. अच्छा, जितने लोग those who are present in the meeting, have you all completed up to day 4? Can you quickly send a yes in the chat box? अगर किसी का नहीं है तो you can write down कौन से डे का नहीं हुआ है, which day you have not completed. I think those who are coming, they are coming regularly only. Day 4 pending. Okay. Day 4 left, but will submit today. Not a problem. Day 4. Okay, not a problem. I will give you time for completing, because day 4 was थोड़ा सा नया, तो not a problem. And it was Sunday also. Till day 3 completed. Yes. So day 4 you get 1 more day to do and solve and give. Now see, let us discuss the date functions quickly, and I will show you how to create a calendar also, a dynamic calendar. That will be good. Can we complete day 4 with 2 videos if it take time to understand? Okay. Not a problem. Whatever you feel comfortable, you can complete, not an issue. Once everyone completes 7 days challenge, we will give a certificate for 7 days. Okay, and those who have completed all the tasks, that means you have completed and sent us the Excel
or if you are on Instagram, then you have put on your story. If you have not put on any day, you can put all of them together, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7, and simply on LinkedIn also, because I did not post anything on LinkedIn yesterday. I will be putting it today, तो कल तक आप कर सकते हैं. Then we will do on the 7th day, we will issue the certificates. We will continue this challenge for 21 days, but 7, 14 or 21 के बाद we will issue certificate for 7 days, including the functions which you have learned, the family. And also those who are regular, I will be offering them my other courses for free, those who are attending it regularly and solving with me. Okay, those who are attending the live sessions also. Those who are not attending live, they will not get the access to that, because there was one condition ki you have to attend live also. So if you are investing time here, definitely you will get some benefits. Chaliye, let us discuss this. This first is date value, then we have year, month, day, date, and there are other functions also, now, today, and all. Okay, so let us start with the first date value. Now date value kya karta hai? It will convert your date into a string. For example, I'm putting today's date. Now anyone who can tell me what is the shortcut key to insert today's date? What is the shortcut key to insert today's date? Gurjot, you can answer this. Those who are attending my sessions, they know it. Today is the function. I'm asking shortcut key. Today is the right function. Today is equal to today. अगर आप लिखते हैं, everyone, when you write today, you will get to see today's date. If you write now, you will get to see today's time. The time right now with the date. Okay. But what is the shortcut key? Control and colon. Very good, Adisha. So to get today's date, the shortcut key is control plus colon. It will give you today's date. And similarly, if you press control shift and colon, control plus shift plus colon, it will give you what? Today's time, not with the date. So now function gives both date and time, but this shortcut key gives only time. तो अगर डेट के साथ टाइम चाहिए तो पहले हम कंट्रोल शिफ्ट दबा दें, कंट्रोल कोलन दबा दें, तो टाइम डेट आ जाएगी. फिर उसी में कंट्रोल शिफ्ट एंड कोलन प्रेस करते तो डेट एंड टाइम बोथ आ जाएगा. And this comes in the PM format, and this comes in the your normal 24 hours date format, time format. Okay, these are the differences. So there was these two functions, today and now. So this was today, this was now. Now suppose I want to extract the year from the date and month from the date and day from the date, then I can use these three functions: year, date, and month. Year, month, and day. So if I write year and if I select the date, it will give me the year from the date. If I write month and if I select the date, it will give me the month from the date in number. And if I select day, if I write day, and if I put the date, it will give स्क्रीन me. हैंग हो गई है सर. Yes, sir. Screen is hang. Your screen is. Just a minute. Just a minute. My voice is audible. Yes, sir. Your voice is audible. एक मिनट आप. Is the screen visible now? यस सर. Yes, sir. तो मैं ये समझा रहा था कि मैंने क्या किया है. What I've done is I have written year function and selected the date. So it is giving me the year from the date. मैंने month लिखा, फिर date select करी तो month निकाल के दे दिया, और day select करा तो day निकाल के दे दिया. ठीक है. ये कब काम में आते हैं? ये कई बार ऐसे काम में आते हैं कि मान लो आपको ईयर वाइज सॉर्टिंग करनी है लेकिन डेट दे रखा है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यू कैन सेलेक्ट
you put the year formula and get it done. अगर आपको मंथ वाइज सॉर्टिंग करनी तो आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डे वाइज करनी तो डे निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ सपोज आई वांट टू क्रिएट अ डेट फ्रॉम दीज थ्री, मेरे पास ईयर है, मंथ है और डे है, मुझे डेट बनानी है, तो वी कैन यूज डेट वैल्यू फंक्शन, कन्वर्ट्स अ डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट इन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेक्स्ट लिख देते हैं, तो दिस इज अ टेक्स्ट, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, एक मिनट, वी हैव टू गिव ओनली one. Now see, date value, and we'll select this number, this date. Okay, so just give me. YYMMTD. Okay. We can use date, year. So year, comma, month, comma, day. T21. T20. So it will give me the date from the, in the particular format. First, I have to select the year, then month, and then the day. Okay, so date function combines the date, and these functions separate the date. Okay, so suppose I write 14/02/2023. Now I want to convert this into date. I write it over here. Now I want to create a date from these. So what I will do, I will write date and first year, then month, and then day. I think I've changed the sequence. So T18, E18, E21st, and then 19. So we have got the date. Okay, so these are basic functions. Now, suppose you want to find the difference between two dates. हमें ये दोनों डेट का डिफरेंस निकालना है. Suppose you directly minus this from this. So you get 264. मतलब this is the number of days, difference between number of days. But I don't want the difference in number of days. I want it in months or day or year. Then what should I do? Suppose यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2011. डेट डिफ फॉर्मूला, हाँ, डेट डिफ फॉर्मूला, dative, dated if, डेटेड डेट डिफ, correct, dated if. Dated if में first date and the last date it is saying, but I don't know, इसमें से 365 में हटा दिया है इन्होंने. And yes, which format you want to, what you want to find out? So I want to find out the years. So we'll write YY. No, name function आ रहा है ना, इसका मतलब dated if नहीं वर्क कर रहा. Is it working at your end? Can you check dated if? I think इन्होंने e-date कर दिया इसको, e-date. जैसे ई डेट तो एंड डेट के लिए है, डेट डिफ, डेटेड इफ वर्क तो करेगा, लेकिन शायद उसमें सेल है ना, वो सिर्फ एक आगे पीछे की चीज। नहीं, dated if वाला जो फंक्शन है वो उसकी फैमिली में दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे. तो If you हाँ, write तो date, नहीं होगा, लेकिन वर्क हो रहा है। so you put this date and this date, उसके बाद अगर मैं MMM लिखता हूँ तो it should give me the result. नहीं दे रहा है ना ये. Everyone try if you are getting the result, because I had used dated if before, but ये इसमें नहीं काम कर रहा अभी फिलहाल.
Can you confirm if you can use dated if? माइक्रोसॉफ्ट 365 में शायद अभी नए वर्जन में काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाँ, ऐप में काम नहीं कर रहा है सर। why in years? Okay, just a minute. No, it is not working. सर डेटेड इफ में जो फर्स्ट डेट है ना वो लेटर होना चाहिए, मीन्स लेटेस्ट होना चाहिए, और उसके जो सेकंड डेट है वो उससे पहले क्या होना चाहिए। वही लिया है तो वो हमने, रिवर्स हो पहला गया तो वर्क D30, नहीं होगा। पहला वही लिया है। टुडेज डेट मैंने आज का D17 टुडे का है, और ये उससे पहले वाला है 21 ईयर है। उसके बाद मैंने ईयर लिखा कि ईयर में डिफरेंस निकाल के बताओ। इट इज नॉट गिविंग मी द आंसर। इतना है, डेटेड मैंने मंथ किया तो 20 मंथ आ रहा है, और अगर मैं सिर्फ डेटेड वाई इफ में ही, करता हूँ। डेटेड इफ में ही लगा रहे हो आप? हाँ हाँ वही sure है। तो ये 365 यूज करें, कोई और यूज कर रहे हो आप? सर मैं 365 में हूँ। इट वर्क्स इन गूगल शीट। एक मिनट, हाँ, मैं आपको करके बताता हूँ। आई यूज दिस इन गूगल शीट्स, इट वर्क्स देयर। एक मिनट, लेट अस ट्राई। यू सर कैन मेरे सी। में भी वर्क नहीं कर रहा सर। आपके भी वर्क नहीं कर रहा ना? 365 ही है, मेरे में भी वर्क नहीं कर रहा। हाँ, तो इट विल नॉट वर्क। मैं इधर बताता हूँ, तो आई विल पुट टुडेज डेट हियर। यू कैन सी माय गूगल शीट नाउ। कैन यू सी माय गूगल शीट स्क्रीन? नो सर। नो। सो लेट मी शेयर इट। एक्सेल शीट ही आ रही है। एक मिनट, लेट मी शेयर। नाउ डू यू सी? जी सर। यस सर। Okay, so Yes, sir. this is today's date. This is today's date and this is earlier date. Okay. We want to find out the difference in years, difference in months, and difference in days. ठीक है, तीनों चीजें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आप डायरेक्टली माइनस करेंगे ना, जिसको सपोज फ्रॉम दिस टू दिस, इट विल गिव यू डिफरेंस इन डेज। यहाँ पे ये वाला काम तो इससे हो जाएगा। ठीक है, मतलब यू कैन copy paste the formula over here, it will work. But if I want in years, I have to use dated if. It is working here in Google Sheets, it doesn't work in Excel. तो Google Sheet में तो काम कर रहा है dated if. Start date, start date is uh, earlier date we can take first, comma, end date is this date, comma. Now unit I want years, so I can write years and close the bracket. तो वाई 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 वाई। Y in inverted commas I have to give. अब क्या हो गया इसको? Dated if parameter value is y should be अच्छा YMD. Okay. So, yes, correct. So you have to write Y for month. Okay, for years actually, and for month you have to write M. So it is 32 months, and you can write, if you write double M you will get an error. ठीक है, और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि क्या एरर आ रहा है, तो we will read that. Yes, YMD, and you can use MD, YM, and YD. Now, MD will be month to date, YM will be year, month, and year date. So we can use YM. Let's see what we get. 8. Now, what does it mean? 8 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? Can anyone tell me? So it's a month difference ignoring year. हाँ, month difference ignoring year, correct. और अगर मैं लेता हूँ dated if, फिर से start date हम एक बार ये ले,
So I have to use C2 first and then B2. So it is giving me 22. So it is month ignoring the days. तो अभी ये days सिर्फ month बता रहा है, ignoring the days, ठीक है? And if I write YD, is there an option called YD? 264 we are getting. So now it is the difference in days ignoring the year, I guess. Sir, MD is, I guess, days ignoring month. Day. MD. I want days, so I'm writing D. See, difference in days is 994, that is for sure. Okay, now हमने लिखा YD, it is giving 264. And if I write MD, MD में आ रहा है 22. So if we put February से इसको मैं करता हूँ, एक मिनट, let me change it to February 14, 2022. Now why it is coming 0? So because date is same, year is same, and only difference in year should come in one. हाँ तो year तो Month आना, and date अच्छा are we same. are not selected year, हाँ तो Yeah, year is coming 1, correct. And if I select यहाँ पर M, then months will come 12 months, and if I select D, then days will come 365. Yes, so this is how it is to be used. If you are putting, so let me show you the formula for these three. This is the first wala formula. This is the second, and this is the third. So dated, if you can use with Google Sheets if you want to find out the difference between days, years and month. This is the today's date, this is earlier date. अगर इसकी बीच का डिफरेंस निकालना है, ये कब काम में आता है हमें, like we want to find out what will be the deadline and all. Suppose this is today's date. Let me put today's date here. So today's date. I want to find out what will be the date after a week from this date. So how to calculate this? Can I write this plus 7? Will it work? आगे 12 तारीख आ it गई. will work. Yes, it अगर will मैं work. लिखता हूँ +12, तो ये 17 तारीख आ गई. If I do 21, तो 26 आ गई. So we can add any number to it and we can find out. But मुझे अगर 3 महीने बाद का निकालना है तो I have to add 90. But e-date, and you can get simply by putting the months. Okay, suppose I want to find out what will be the date after 3 months from today. So you will get this date. It will be So not audible, sir. yeah, actually got logged off. Again, I'm sharing my screen. Sir, if we want to go to previous year, then we have to minus it. हाँ अगर मेरे को प्रीवियस ईयर में जाना है कि 11/5 से पहले के टाइम मतलब, तो वी हैव टू माइनस. हाँ, वी हैव टू माइनस, करेक्ट. अगर 11/5 से मान लो 3 महीने पहले जाना है कि 3 महीने पहले क्या डेट थी इससे पहले, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट ई डेट दिस एंड राइट -3. सो इट विल टेक यू बैक इन टाइम. तो ये देखो अगस्त में लेगा, 5 अगस्त थी. अगर मुझे निकालना है कि व्हाट विल बी द एंड ऑफ मंथ से डेट, तो हम ई ओ मंथ यूज कर सकते हैं. देयर इज द फॉर्मूला लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर डेट. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट विल द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, यहाँ से तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 11/30/2003. मैं इसको 1 लिखता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट.
सो एंड ऑफ मंथ से एक महीना कैलकुलेट करना है। तो ये सीएस के काम में आता है कि इस मंथ का जो ड्यू डेट है वो मंथ खत्म होने से 20 दिन के बाद है, या 2 महीने बाद है, या 3 महीने बाद है। तो कोई भी डेट आप लिख दो, फिर यहाँ से 3 मंथ्स कैलकुलेट कर लो, तो इट विल गिव यू द लास्ट डे ऑफ द मंथ विच विल बी गेटिंग ओवर। 6 मंथ्स निकालने हैं तो 6 महीने निकाल दो। तो ये इस तरीके से आप काम में ले सकते हो, ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ। देन देयर इज अ वीक डे ऑल्सो। weekday concept is there. Day of the week of the provided date. Suppose you want to find out कि which week are we into, तो आप डेट सेलेक्ट कर लो, it will give you the week. तो it is the first week. Suppose मैं लिखता हूँ यहाँ पे 26, sorry 11, 26, 23। अभी आंसर 1 कैसे आया? वीक। Sir, I think it represents not week, it's represent Monday. Means हाँ, first day, second day. It's represent Sunday, so a weekday is one. weekday is always 1. No, I No. think, हाँ 5 November is a Sunday, 26 November is a Sunday. So it is okay. coming one. अच्छा, if I select 2, टाइप 3 करते हैं तो 6 आ रहा है। अच्छा, करेक्ट। नहीं, मतलब अगर वीक नंबर, अच्छा वीक नम आई हैव टू यूज फॉर दैट। देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ वीक नंबर ऑफ द ईयर, करेक्ट। आप अभी करते हैं तो 48 पूरे साल में कौन सा वीक चल रहा है, 52 वीक्स होते हैं, अभी हम 48 वीक में हैं, तो वीक नंबर यू कैन यूज फॉर दिस। सर मेरा एक डाउट है इसमें। हाँ, जैसे हम एक्सेल में लाइक ऑफलाइन में जैसे ऑल्ट टैब कर कर हम टैक्स बार को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे गूगल शीट में कैसे टैक्स टैक्स बार को जैसे सिलेक्ट करें नहीं कर सकते। एक सेकेंड, कैन यू रिपीट, क्या कह रहे हैं आप? लाइक ऑफलाइन में हम ऑल्ट टैब कर कर जो टैक्स शीट को हम एक्सेस कर सकते हैं आराम से। हम्म। बट गूगल शीट में वो काम नहीं कर रहा है मोस्टली। ओके, आई गेट इट। सो व्हेन यू प्रेस ऑल्ट की इन एक्सेल यू कैन डू दैट, बट हाँ यहाँ नहीं होता है, ऑल्ट एफ से करेंगे तो it will not function because actually they have not created these are not hotkeys। ये जो है ये hotkeys नहीं है, एक्सेल में होता है। ये तो गूगल शीट का शॉर्टकट कीज आर डिफरेंट एज कंपेयर टू एक्सेल। नाउ सपोज व्हेन यू प्रेस कंट्रोल 1, इट विल नॉट ओपन द फॉर्मेट सेल वाला विंडो, इट हैज ओपन फॉर्मेट। तो ये देखिए, कंट्रोल 1 मैंने प्रेस करा, इसने फॉर्मेट ओपन कर दिया। कंट्रोल नहीं 2 ऐसे से कौन सा सेव ऐसा हो गई। फॉर्मूला है जो ऐसे आराम से हम एक्सेस कर कर जैसे गूगल में ऑफलाइन एक्सेल में हम प्योर लाइक ऑल्ट देकर मोस्ट ऑफ द शॉर्टकट यू कैन यूज। करेक्ट। बट Uh, हियर in, इट इज in this there is no in this there is no such shortcut keys, गूगल शीट में नहीं है ये सब। सारी थोड़ा ऑफलाइन सा, में लाइक हाँ माउस से लेकर टैक्स। हाँ, you have to do it from the mouse only, there is no shortcut keys for this। whatever shortcut keys are available they have given a shortcut for this। जैसे फ्रीज ओके भी करना होता है तो वी कैन डायरेक्टली डू इन एक्सेल, ऑल WFF करेंगे तो फ्रीज हाँ हो जाता है। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, गूगल शीट में थोड़ा सा ये इशू है। यू हैव टू मैनुअली गो टू जो डेस्कटॉप व्यू। वर्जन है उसमें होता है कि उसमें पता नहीं, मैंने यूज नहीं किया है। किसका? किसमें? गूगल शीट्स का जो डेस्कटॉप वर्जन है, किसमें? शीट्स में अभी वो उन्होंने दिया है ना, डेस्कटॉप वर्जन भी दिया है, हम डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं सर। गूगल शीट्स का हाँ आई हैव नॉट यूज दैट। वो ओके कैसे काम में लेते हैं? सर, यू मैंने कैन भी यूज डाउनलोड नहीं गूगल किया शीट्स। लेकिन अभी, हाँ वो गूगल के साथ, गूगल जो ड्राइव सिंक है ना, उसके साथ वो आता है शायद, एक्सेल मीन्स गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स सब आता है उसमें साथ में। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो ऑप्शन आता है उसमें। नाउ द नेटवर्क हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग ट्रबल, बार बार ये आ रहा है जा रहा है। अच्छा, तो व्हाट विल डू इज, एक मिनट, सिंस टाइम इज आल्सो अप नाउ, आई विल शो यू व्हाट टास्क यू हैव टू डू, यू कैन ट्राई इट एंड टुमारो विल डिस्कस। सो कम टू द शीट नंबर 5 टास्क, देर आर 2 शीट्स विच आई क्रिएटेड। इसमें जो डे 5 टास्क वाला शीट ना वो हमें करना है।
So basically, we have date, we have app, and we have revenue. Okay, so we have to calculate the revenue between these two dates. ठीक है, इन दोनों डेट के बीच का रेवेन्यू निकालना है. फिर रेवेन्यू फॉर द मंथ निकालना है, ये जो मंथ दे रखे हैं उसका डिफरेंस. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है मंथ का फॉर्मेट अलग है, उधर डेट है. ठीक है, सो वील हैव टू यूज डिफरेंट फंक्शंस. रेवेन्यू फॉर द मंथ बाय ऐप क्राइटेरिया, तो अभी डेट भी आ गया और ऐप आ गया. तो इस मंथ में इस ऐप से कितना रेवेन्यू आ रहा है वो आपको निकालना है. तो दीज आर द 3 टास्क फॉर डे 5 in which we have to use SUMIF along with the date functions. तो 1 जून से लेके 15 जुलाई तक के बीच का जो भी रेवेन्यू आया है वो आपको निकालना पड़ेगा. उसमें जो डेटा है, डेटा इज सॉर्टेड एज पर डेट वाइज सॉर्टेड है, एंड द डेट्स आर रेंजिंग फ्रॉम जून टू सितंबर मंथ का है. सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दीज आर द 4 मंथ्स. इन चारों महीने का पहले तो डेटा निकालना है सिंपल, फिर इन डेट्स के बीच का निकालना है, एंड देन डेट एंड कैटेगरी उन दोनों के हिसाब से निकालना है. सो यू कैन यूज SUMIFs and DSUM also. Try it and see if you can do it. नहीं होता है तो डेफिनेटली वी आर देयर, देन तो हम करेंगे. एक चीज और थी कि अगर आपको डेट बनानी है इन तीनों फॉर्मूले फंक्शंस को काम में लेके, सो वी कैन सिंपली से कि पहले मैंने डेट लिया, दिस सेल रेफरेंस, देन वी कैन पुट अ एंड एम्फरसेंट साइन, एंड देन आई कैन पुट अ इन्वर्टेड कॉमा में डैश, एंड अगेन पुट अ एम्फरसेंट साइन. लेट मी जूम इन, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको. अभी नहीं होगा. Okay, so I want to create a date from the columns which are there. So first I will select the day. तो डे वाला जो कॉलम है that is this one. Okay, उसके बाद I will write down ampersand, and साइन लगाएंगे. Inverted comma में you will put a dash because I want a dash after the day. Then I want month, so I will select the month. I will put a ampersand again. Again, I will put a dash and again an ampersand, and then I will select year and we will close the bracket. So we will get the date. ये देखिए यहाँ पे date आ गया. Similarly, you can just drag it and we can use the date function also. वो जो अभी हमने date वाला function देखा था उसमें भी कर सकते, वैसे भी कर सकते हैं. Otherwise, this is a different method of doing it. Text join will be easy. Yes. So text join, let me teach you text join also. Text join. Yes. And first is delimiter. So I want all the 3 to be separated by a dash, comma. Then I will select day first, comma. Then I will select month, comma, year, and close the bracket. I put 2 together, 1, 2, and 3. सर आपकी आवाज नहीं आ रही, हैंग मोड है शायद. I guess there is some network. Am I audible, everyone? Yes sir, now you're audible. Okay, so I was doing something. Yes. So is my screen visible? Yes sir. Yes, sir. Okay. So we were using text join. Text join क्या करता है, वो भी आपका text combine ही करता है. तो first you have to give delimiter, मतलब what is the separator. So you want a dash, comma, D11, C11 and B11 I put, and let me see. अभी इसमें date नहीं आ रहा है. For some reason why the day is not coming. Text join है तो I think it will join only the text. If it is a number, it will not join that.
अभी वैल्यू एरर क्यों दे दिया इसमें? D11 अच्छा, ignore empty. I have to put a comma. Okay, my mistake. So when you are using text join, okay, when you are using text join, so first you have to put the delimiter, then it is saying ignore empty. So we don't want to use this ignore empty. So we have just skipped it by putting a comma. Then I have to select all the cells which contain the text which I want to combine, and then we are good to go. ठीक है, you can put 1 or 0 in the ignore empty if you want. तो इस तरीके से भी आपका डेट कंबाइन हो जाएगा. Once you have combined all the dates, then this was the first. I've not given a task. Okay, then you can practice on getting the different answers for different month. Basically, we want to solve this task only. So this is the sheet that you want to you will have to solve. Tomorrow I will discuss the answers for this, and I wanted to show how to create a calendar also. That I will do tomorrow because now it's already 11. So tomorrow. कल थोड़ा वीडियो थोड़ा छोटा रखना सर, बहुत ज्यादा 2 आवर हाँ वीडियो थोड़ा छोटा रखना. हाँ, I will cut it. मतलब ये वाला जो ये तो एक्चुअली लाइव हुआ है, बट इसको I will cut the relevant parts and post it on my YouTube. जो मैंने 4 और 5 लाइव लिया है, जो डेटाबेस फंक्शन था उसका भी वीडियो छोटा छोटा काट के will put so that people can watch.